नमस्कार। मेरा नाम कैप्टन विपुल चौधरी रिटायर्ड है। विद मी इज टुडे कमांडर राम गुरुम. Sir is an ex-NDA. He served with the submarine arm of Indian Navy, and while in service, he also completed his MBA from the prestigious Faculty of Management Studies, Delhi University. Then he gained a Six Sigma from the Indian Statistical Institute, and after his service with the Navy, he served with Grant Thornton, which is a very well-known consulting firm in the defense and aerospace consulting practice. And now he has taken upon himself the mission to help 10,000 veterans into making the transition from armed forces to a satisfying and fulfilling career in the corporate. And Sir has been a regular contributor to Values Network, Values Talk, and we are very grateful to him for his contributions. Today, we have kind of curated this talk to help you understand as to how you can negotiate your salary and benefits package when you are doing the transition. ये फौजी ऑफिसर्स के लिए या यूं कहें आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स के लिए और ज़्यादा इसलिए प्रासंगिक हो जाता है बिकॉज हम लोगों को आदत नहीं है नेगोशिएशन की। आपको जो सैलरी मिलती है आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस डिफाइंड है वो सबको। सो इट्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रक्चर्ड थिंग वेयर एवरीथिंग इज डिफाइंड फॉर यू, यू आर नाउ मूविंग इनटू अ सिचुएशन वेयर at the same level of joining also there can be differences as high as 40% of what you can get, and that impacts your future payouts as well. So thank you for choosing this topic to help the officers in negotiating their packages better. Answer. Welcome to the talk today. Thank you, Vipul. Thank you for inviting me to yet this another special series of our value talks. And I really appreciate the kind of work that Value Network is doing to support the transiting veterans and also other, entrepreneurs and the veterans who are already well established in the corporate. A lot of services by the Value Network. I don't know how many of you know it. So I hope today, after today's discussion, you will actually carry forward some takeaways. And I was listening to the talk before that somebody has actually gone to few levels, and now he's been called back for negotiations because I think he has asked for a little more money. So I'm sure today's discussion will help you to achieve that goal. So sir, मैं आपसे एक वैसे ही because negotiation is something I keenly follow. है क्या सर नेगोशिएशन डेली लाइफ में हम लोग, एंड नाउ इट इज नॉट एग्जैक्टली अ वेरी वेल टेकन वर्ड, नेगोशिएट कर रहा है बहुत ज्यादा टाइप्स करके, दैट्स हाउ. So how it is, what is, where does negotiation stand in our daily lives, how important it is, and how important it is when it comes to salary and benefits negotiation by veterans when they are trying to make the crossover? Okay, good question to start with. See, negotiation at its core basically is basically reaching an agreement between two or more parties. Because two or more parties are involved and there's a particular goal. And how do we discuss so that it generally turns into a win-win condition? And हम लोग actually, as you rightly said, we always do it on a daily basis. चाहे हम अपने बच्चे को बोलें कि पहले होमवर्क खत्म करो और फिर खेलने जाओ, अगर वहां पर अनबन हो जाती नहीं मानते, then we say okay, at least do 50% and then go and play and then come back and do 50%. Right? That is also a part of negotiation or persuasion. Or you go and buy a car, buy a house. So we discuss and negotiate on the payment terms or accessories or some paid service. So on a day-to-day basis, we have been doing it unknowingly. Yeah, FOS maybe, right? FOS maybe you want some particular project timelines to be increased. So you discuss with your managers, you discuss with the boss, आप अपने boss के साथ discuss करते हो, or you are discussing with your commanding officer why this particular person deserves a commendation. That also is again a negotiation. So we have been doing it on a day-to-day basis, चाहे अपने personal life में हो या professional life FOS में हो, but actually we don't categorically term it as कि मैं negotiate कर रहा हूँ. And as you were bringing out, yes, this topic is little naive, especially फौजियों के लिए, because जब हम कहते हैं negotiating for salary, वो हमें actually कभी करने की जरूरत नहीं पड़ती, because salaries are, slabs are well defined, and every year increment or increment on the promotion also well defined. So वहां पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है.
But all said and done, negotiation is a skill. And like any other skill, this can also be learned and also can also be excelled. Philosophies वही रहेंगी, principles वही रहेंगी, चाहे अपने बच्चों के साथ negotiate कर रहे हैं, चाहे अपने spouse के साथ, और चाहे आप अपने professional life के साथ. So by using the same philosophy, same strategy, how do we negotiate for the salary अगर हमें job offer मिलता है, right? That more we'll be actually focusing on. So the second part, I think you asked me why it is important to negotiate, especially for the transiting veterinary when it comes to the job offer. Now उसके कुछ बहुत ही important reasons है. Number 1 कि अगर आप negotiate करोगे तो definitely there's a higher chance of getting more salary. Right? अगर 10% भी salary का difference हो जाता है just because you negotiated, so आप imagine करो on a compound basis how much it will increase to. That's the first thing. Second is, we all know जो second year का increment होगा, that will depend on this base figure. यहाँ पे जो promotion वाले होंगे, that will again depend on this base figure. So अगर base figure नीचे है, obviously the percentage of that will also be less. So that is not, so your salary, current salary, or the first salary is not only affecting our current pay package, is also affecting on the future prospects of you getting higher salary. तो उसके लिए भी जो है negotiate करना important है. और तीसरा, as I said, it's one of the life skills, right? Everybody wants कि उनका manager अपनी team के लिए, अपने projects के लिए negotiate करे. It says that 70% of the hiring manager actually expect their candidate जब job offer होता है तो negotiate, कुछ ना कुछ तो negotiate करेगा. Because negotiation, as I said, important trait है. It also shows that actually the candidate can speak for himself. It's not only related with finance. अगर जरूरत पड़ेगा तो he can actually advocate, do advocacy for his team member or seek some better opportunities, a better terms and condition for his project while he is in his company. बहुत एक important trait है, इसलिए everybody looks forward कि the other person should have that negotiation capability, negotiation strategies, a communication skill अच्छा हो. And I think these are the few important reasons why negotiation must be done and it is important. सर, ये सही है आपने जो कहा कि negotiation करने के फायदे होते हैं. One stands for themselves. When I started my career about 16-17 साल पहले रियल एस्टेट में, हमारा तो बेसिक सर्वाइवल नेगोशिएशन है. बट इन ऑल ऑनेस्टी मुझे अभी भी ऐसा नहीं है कि आई एम वेरी कंफर्टेबल व्हेन देयर इज अ टफ सिचुएशन. तो होता है, चैलेंज होता है सर. व्हाई डू सम पीपल एक्चुअली चूज नॉट टू नेगोशिएट देयर सैलरीज या similar things, and what do you think are the potential consequences of making that choice? Yeah, see, in fact, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि 60% of the candidates do not negotiate when they receive a job offer. They know that it is an important step in the hiring process, but फिर भी वो negotiate नहीं करते हैं. और जो बाकी 40% जो negotiate करते हैं, 50% of the time whatever they ask for, generally they get it. So obviously, there's a lot of advantage in doing it, because somebody has said that you don't get what you deserve, you get what you negotiate for. But फिर भी, as you rightly said, most of the people still don't negotiate. तो उसमें first case मुझे क्या लगता है, reason is they do not know that there's a scope for negotiation. और अगर मैं negotiate करूंगा तो maybe वो company job दे रही है मुझे, so I may look like being ungrateful or too demanding. In fact, ऐसा मुझे लगता था, right? Because when I left about 8 years back, I didn't know anything about negotiation. And when the manager or my reporting boss told me something about this salary, I thought, it's okay, sir. Though it was a little less than what I was getting in the Navy. But I said, and incidentally, that person also happened to be the Fauji. And I said, sir, so if you are saying that this is the figure, then that may be good for me, or that may be the established slabs. तो मैं अब इसमें क्या negotiate करूं? But one good thing that he said was, forget the military, forget that I am also from the same service, और मैं भी एक time पे फौजी था, because now my interest is different. I am here to get the best candidate or the best resource at the minimum cost. So negotiate करो, right? Had there been somebody else in my place, they wouldn't have said this. But मैं कह रहा हूँ कि तुम negotiate करो. So that was the time I said, okay, let me negotiate. So I negotiated. And I think I got about 10 to 15% higher than
what I would have got if I would have just taken it, thinking कि थोड़ा अनग्रेटफुल लगता है अगर मैं किसी के साथ नेगोशिएट करूं। तो हो सकता है कुछ लोग के दिमाग में जो यहाँ हैं ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि नेगोशिएट करना ठीक नहीं है या अच्छा नहीं है, बिकॉज हमने कभी किया नहीं और हमको आता नहीं है। The second reason is they are little skeptical or they're little afraid कि अगर मैं नेगोशिएट करूंगा तो ऐसा नहीं कि जॉब ऑफर विड्रॉ हो जाए या जॉब ऑफर कैंसिल ही कर दें, बोलेंगे नहीं तो मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी ना चला जाए। तो दैट इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट रीजन दैट पीपल मे नॉट नेगोशिएट, कि जो आया वो ले लो, नहीं तो क्या पता ये भी जो है विड्रॉ हो जाए अगर मैं नेगोशिएट करने की कोशिश करूं। जबकि एक्चुअली होता नहीं है ऐसा, नोबडी एक्चुअली जस्ट बिकॉज यू आर स्टार्टिंग नेगोशिएटिंग पीपल विल विड्रॉ ऑफर। वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, बोलेगा बॉस दिस डजंट फिट इन आवर बजट, इतना ही होगा। बट ऐसा नहीं होगा कि नहीं आपने नेगोशिएट किया तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, ऐसा तो रेयर, आई थिंक ऐसा होता नहीं, मैंने तो नहीं सुना आज तक। एंड द थर्ड थिंग इज दे नो दैट दे हैव टू नेगोशिएट बट दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। आई मीन दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस कि कैसे अप्रोच करें, क्या पूछें, कैसे पूछें, कौन मुझे बताएगा, व्हाट इज द राइट फिगर, हाउ मच शुड आई आस्क, वो क्या दे सकते हैं, एक टॉपिक को कैसे ब्रोच करूं मैं। सो दीज फ्यू रीजंस कुड बी देयर जिसकी वजह से लोग नेगोशिएट नहीं करते। एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यस कॉन्सिक्वेंसेस जैसे जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम नेगोशिएट नहीं करेंगे ऑब्वियसली वी लूज आउट ऑन दैट पोटेंशियल ऑफ अर्निंग हायर। जैसे मैंने बताया, मैंने 10 to 15% नेगोशिएट करके बढ़ाया, तो अगर नहीं करता तो आई वुड हैव गॉट लेसर मनी। सेम थिंग गोज फॉर यू आल्सो। एंड सेकंड इज इफ समबडी इज अंडरपेड, वो एक्सेप्ट कर लिया विदाउट नेगोशिएशन, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट ऑन द जॉब सेटिस्फैक्शन आल्सो, कि यार ये तो मैं इतने कम पैसे पे काम कर रहा हूँ। तो जब जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, यू विल नॉट एंजॉय द वर्क, यू विल नॉट लर्न मच, एंड ऑब्वियसली देन फ्यूचर प्रोग्रेशन ऑन दैट पर्टिकुलर जॉब, तो कैरियर प्रोफाइल में भी फर्क पड़ सकता है डेफिनेटली। एंड थर्ड इज अगर हमने नेगोशिएट नहीं किया तो हो सकता है जॉब सैलरी के अलावा बाकी कुछ पर्क्स हो सकती थी, कुछ इंश्योरेंस हो सकता था, राइट, या लीव हो सकते थे, दोज आल्सो विल जस्ट लाइक हम उसको भी फोरगो कर देंगे। नेगोशिएशन इज मस्ट, एज दे से यू लूज 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। तो अगर आप नेगोशिएट करोगे तो कुछ तो प्रोबेबिलिटी है कि कुछ होगा, लेकिन अगर नेगोशिएट ही नहीं करोगे तो फिर 100% है कि कुछ नहीं होगा। जो आपको ऑफर किया गया, आइदर यू से यस टू इट और यू से नो टू दैट। ओवर टू यू विपुल। सर आप जो बोल रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज इससे मेरे को अपने काम में भी बेनिफिट होगा एंड आई वुड नॉट लाइक टू गो एनी लर्निंग्स लाइक दैट। आपने एक इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट उठाया, a lot of time people don't negotiate because they don't know how to negotiate. So if you can briefly touch upon what are the fundamental principles of effective salary negotiation at least. Okay, see, having said that, हर एक चीज को करने के लिए कुछ ना कुछ strategies, कुछ ना कुछ principles होंगे, and those principles will more or less remain same irrespective of what kind of role you are targeting, what kind of industry, what kind of a domain. Strategies generally same रहेंगे. So first is preparation. When I say preparation means concern आदमी को या आपको पता होनी चाहिए कि what is the salary slabs, या reasonable salary slab for that particular kind of role, in that particular kind of industry, in that particular kind of location. Because you cannot compare same role, same industry in Bangalore to maybe a smaller place like नागपुर और रांची। तो वो हमें ज्ञान होना चाहिए। अब उसका ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? उसका ज्ञान हो सकता है, आप गूगल पे जा सकते हो, ग्लासडोर, राइट, पे स्केल। So these are specific websites where you'll actually, when you give all these parameters, कौन सा location, number of years experience, which particular domain, which particular location, so it basically give you some tentative figures. At least something is better than nothing. आप मतलब totally lost नहीं हो. That is number one. Second, at work, people who are already in the corporate, जो veterans यहाँ से गए हैं, you can have a chat with them. उनसे आप बात कर सकते हैं कि what is the salary slab that they are generally getting. So that basically, gives you an informed awareness about what is the trend, or somebody can call it also market rate, कि क्या चल रहा है। और थर्ड है कि आपने कुछ ऐसा स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन या कोर्सेस और प्रोग्राम किया है जो मार्केट में इज बेसिकली बीइंग सॉट आफ्टर। हो सकता है आपने CISSP किया हो सकता है आपने फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स किया हो, और एनी अदर कोर्सेज प्रोग्राम किया हो जो कि which has got some edge over others, so that कि ये इससे जो है मेरे को थोड़ा सा I can get some more
negotiation ईवे, तो ये जो है आपका प्रिपरेशन वाला पार्ट हो जाएगा. एंड सेकंड इज वंस यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद दिस, हाउ डू वी एक्चुअली कम्युनिकेट टू द अदर पर्सन सो दैट ही और शी अंडरस्टैंड कि आप एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हो, कि व्हाई डू यू डिजर्व some particular 10% or 20% increase over whatever has been told to you. तो ऐसे केसेस में what we say is, facts over feelings. Emotions में नहीं कि सर मैं तो 20 साल की देश के लिए सेवा की है, so इतना तो मेरा बनता है. While the company will have a great respect for the service that you have done, but अगर पैसे देने की बात आई तो फिर then they'll like to see the outcome or what value do you bring, as they say. तो क्यों हम डिजर्व करते हैं, we need to justify with our experience, with our skills, और ऐसे भाषा में बोलें जो दूसरे को समझ आए, राइट? उस टाइप के हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, उस टाइप के हम रीजंस दे सकते हैं, जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, दैट व्हाई डू वी से दैट वी डिजर्व 10 or 15 or 20 or even 30%, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर सैलरी दे हैज बीन आस्क्ड. लाइक एक जगह मुझे याद है, I was offered a job, but the kind of salary that they were giving, either they did not know या मुझे नहीं पता था कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या इस पर्टिकुलर टाइप की कंपनी में ऐसा ही मिलता है. आई वाज शॉक्ड. ऑब्वियसली देन आई हैड टू से नो टू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ सैलरी स्लैब. एंड देयर इज नो स्कोप, मींस जो आपके दिमाग में है और जो ऑफर है उसके बीच में इतना ज्यादा गैप है कि दे कैन नॉट मैच. एंड थर्ड इज it's a collaborative approach. Actually, it's like a conversation. There's no confrontation. ये demand नहीं है हमारी, because both the parties has got some obligations, right? They've got some resources, some limitations, and we need to respect that. तो ये collaborative approach होगा, थोड़ा flexible रहना पड़ेगा. हो सकता है they are not able to give you that particular salary base, but maybe they are open with the location. और आपके दिमाग में location important है. हो सकता है you want to work near your house. For example, मान लीजिए आपको गुड़गांव में दिया जा रहा है, but they say I can provide you Noida and you are staying in Noida. तो एटलीस्ट दिन में एक बार आना 1 घंटा और जाना 1 घंटा, 2 घंटे के समय की बचत हो रही है. So few 5 or 10% lower in the salary, I think they'll be well compensated, right? So one needs to be open and flexible till the end and understanding the other person concern कि उसका actually concern क्या है, whether he cannot give the salary or there's a limitation of the responsibilities. हो सकता है कभी-कभी because I remember in one of the job जब हम नेगोशिएट कर रहे थे, we said the responsibilities so that we cannot give you so much. Then फिर मैंने बोला okay, then increase my responsibilities. No, instead of only looking after this, you give me this plus this if you have, right? Because I can do both. So if that is the concern कि responsibilities कम है इसलिए पैसा कम दे रहे हैं, so I'm okay to take more responsibilities. So can we actually further discuss on that? And that actually gives you a totally new direction to the negotiation. Then it actually shows that yes, you know how to negotiate. आपको strategy आती है, and you can get your ends met. So that is important, because फौज की तरह नहीं है कि मतलब ना drill है कि ये ऐसे करना तो ऐसे ही करना है, या तो होगा या तो नहीं होगा. ये you can say it's like a chess की तरह है. chess हो सकता है कभी-कभी queen को हासिल करने के लिए आपको pawn भी sacrifice करना पड़े. राइट. सो थोड़ी सी स्ट्रेटजी दिमाग में लेके, थोड़ा सा आगे का सोच लेके कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे आई विल बी एट अ बेटर पोजीशन, एंड आल्सो the employer or the company, because unless it is a win-win, negotiation will never be complete. So हम सिर्फ अपने साइड का ही नहीं दे सकते, we have to see the other side also, because tomorrow when you get the job offer, now you'll be on the other side, right? So you definitely have to think about that as well. Over to you, Vipul. सर आपने जो कहा yes I understand, but एक चैलेंज तो इसमें रहेगा ही, which is I may not say कि जी मैंने I served the country for 10, 20, 30 years, therefore give me a salary, but that facet cannot be taken away from my resume. So how do I as a veteran effectively translate my armed forces experience to justify a higher salary in a corporate role? I mean, what do I say? ठीक है, ये I understand कि ये कहना is not exactly कि भाई मैंने देश की सेवा करी इसलिए आप पैसा ज्यादा दे दीजिए, although if I were to decide I would agree to that also, but let's say how do I put it in a language which corporate understand? Yeah, that's very very important, right? Because अब हमने एक टाइप का आर्म में ज्वाइन करके, maybe army, navy or air force, so we have given our maybe 10 years, 14 years, 20 years or even beyond that for the service of the nation. But how do we translate that into something tangible, something that the other person can understand, the company can understand? कि अगर आपने इस तरीके का किया है तो yes, it can be actually used for this particular kind of task. So we all know, veterans bring a lot of skills on the table.
चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, एथिकल वर्क प्रैक्टिस हो, राइट, क्रॉस फंक्शनल एंड डाइवर्स काइंड ऑफ टीम मैनेजमेंट हो, ये सब कुछ किया है. सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली नीड टू बी ब्रॉट आउट in the parlance that the other person can understand. And with respect to the job that you are doing, obviously it should be relatable with the kind of job also जो हैंड में है. रोल के साथ मैच होना, रोल के साथ अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है. तो आपने स्किल्स को इस तरीके से ट्रांसलेट कीजिए सो दैट इट बिकम्स इट बेसिकली गिव्स अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द काइंड ऑफ टास्क दैट यू आर गोइंग टू डू. चाहे आपने वो प्लाटून को लीड किया, चाहे आपने शिप को कमांड किया है, राइट, और यू बीन head of the department. So how have you actually done those people management there that you can actually replicate here for the betterment of the organization or the team or the company? That is the first. Now, second is using the civilian friendly language. मतलब मिलिट्री जार्गन में अगर मैं उनको कहूँ कि ओके, यू नो, आई वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग our unit from A to B for the deployment, people actually may not understand. But अगर उसको हम इस तरीके से ब्रेक डाउन करके उसमें सप्लाई चेन, उसमें लॉजिस्टिक्स, उसमें ट्रांसपोर्टेशन यूज करके बताएं कि भी हमने इस पर्टिकुलर लोकेशन से प्लेस A से प्लेस B, you know, 600 people, this much of weaponry, this many of drugs, this much of ration, with so many days, within this stipulated time we move from place A to place B. Then you can see all these elements into play. चाहे वो strategy हो, चाहे planning हो, चाहे scheduling हो, चाहे risk management हो, चाहे you know supply chain हो, तो ये सब चीज actually people can see in action. उनको वो समझ आएगा, बोलेगा अच्छा इसने इस लेवल पे वहां किया होगा, तो फिर हमारा जो है ये जो हमारी सप्लाई चेन की कंपनी है या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है या वेयर हाउस मैनेजमेंट है, then I think this particular person can actually do this job, even though he does not have the corporate experience. Corporate में इसमें नहीं किया है, लेकिन जो strategy है, जो tactics है, जो thought process है, वो similar है. Only the environment is different. And third is making it quantifiable. जैसे हम लोग resume में भी बोलते हैं ना कि you know make it quantifiable so that the other person can actually appreciate and see कि yes, अगर वहां पर हम लोग ने इस तरीके का काम किया है, whether it is with respect to the leading the number of team, right, और handling of the budget, तो इस तरीके का अगर हम उसको quantify करेंगे, then it is easier for the other person to you know judge the scale and depth of our experience. तो rather than just saying कि सर मैंने तो 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने इस लोकेशन पे काम किया है, एडवर्स फिजिकल स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम किया है, बहुत बड़ी टीम को मैनेज किया है, राइट, rather than all those which actually plays more on emotions, more on feelings, you know, या देश भावना, breaking down into these quantifiable metrics, relatable experiences, you know, into chunk size, some instances, some आपके projects, तो उसके बारे में बताएंगे, the other person can actually appreciate better. And then he thinks, yes, अगर इतना experience है और इतना value ला सकता है ये particular candidate, then I think you know he deserves a chance for the negotiation and maybe whatever you know salary range that the particular person is asking for. तो ये सब चीजें दिमाग में रखना बहुत important है. सर ये तो हुआ. What point in time have you usually experienced as a good time to initiate a salary oblique benefits negotiation in the hiring process? Okay, so you know before that one thing needs to be understood by everyone कि every role is budgeted. हर एक रोल का कुछ ना कुछ बजट होगा. ऐसा नहीं होगा वो रोल कि इसमें हम कुछ भी पैसा दे सकते. That everybody knows, depending on that level, depending on the industry, depending on the expertise required. So every role will be budgeted X, Y, Z. Some figure will be there. Now the company's interest is it wants to hire the best candidate within that available budget. जो भी budget, it may not be X, but it could be you know let's say 10% below X to 10% above X. So company का interest हुआ है. And as a candidate, I want the best for myself, depending on my capabilities, depending on my experience, depending on my last drawn salary, depending on what I think that I am worth, depending on my research in the industry that my you know corresponding postmates or colleagues who are in the corporate they are earning. तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा कि मैं उस लेवल तक जाऊं, preferably and most of the time you know it is better to let the company or the hiring manager initiate that discussion on the negotiation. And generally वो second या third round के बाद once they find कि okay the candidate technically qualified है, experience wise है या education wise है
या नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाइज है या हैंड्स ऑन स्किल है, उसका सब कुछ ठीक है, देन ओनली जनरली दे गो टू दी सैलरी पार्ट, राइट? बिकॉज वो सैलरी पहले डिस्कस करें, क्या फायदा इफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ टास्क, जनरली दैट विल बी टुवर्ड्स द सेकंड और थर्ड राउंड। लेकिन अगर सेकंड और थर्ड राउंड के बाद भी एंड आपको लगता है कि यार इंटरव्यू तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बट व्हाई इज दैट सैलरी का या फाइनेंशियल फिगर का कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, ऐसे केसेस में देन वन नीड्स टू पाइप अप, बिकॉज ऐसा हो सकता है, इनफैक्ट मेरे साथ हुआ है, where the other person, that is the hiring manager, may think that this person actually already knows about it, या उसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पता है, एंड सिंस द कैंडिडेट ने भी नहीं पूछा और हमने भी नहीं बताया, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट कम्स एज अ शॉक कि सब कुछ होने के बाद जब आप वो फिगर बताया गया, दैट टाइम they were giving you this and your expectation was that, and that happened towards the end, right? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। if you feel कि सेकंड थर्ड राउंड के बाद जब इंटरव्यू लगभग खत्म हो गया, if they have not brought it out by then you must pipe up and you bring out politely saying ki, sir, I think most of the things are over, so can I know what is the salary range that you have in your mind for this particular kind of a role? That is the first thing. Now second is sometimes it might happen, especially मैं कभी-कभी लोगों से बात करता हूँ तो सबसे पहले वो सैलरी पूछते हैं, बोलते हैं, right? Some people tell me कि the first thing that they ask is, okay, आप फौज से आए हो, आपको क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? It is quite difficult to answer that question head on, because either they may think that this person will ask too much, that's why I have to ask him now only, ऐसा नहीं कि सब इंटरव्यू हो जाए और फिर ये ऐसा पैसा मांगे हम दे ना पाए। और सेकेंड ऐसा हो सकता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन मे नॉट हैव एनी आइडिया, शायद उसको कुछ पता ही नहीं है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ सैलरी दैट दिस पर्टिकुलर रोल विल गेट फाइनली। तो इसलिए थोड़ा सा बॉलपार्क फिगर कंफर्मेशन करने के लिए कि ओके हिज एक्सपेक्टेशन एंड आवर एक्सपेक्टेशन एक्चुअली मीट, तो उस केस में कभी कभी लोग पहले भी पूछ लेते हैं। तो अगर पहले ऐसा पूछ लिया है तो देन वन शुड बी रेडी विद दैट बॉलपार्क फिगर, सम रेंज कि ओके आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग this is the range for me to start on this particular role. तो हो सके wait for the other person, hiring manager, to start that talk, लेकिन काफी टाइम तक नहीं होता है, then you need to initiate. लेकिन अगर वो शुरू में ही first question इस तरीके से आता है, then you should have some benchmark or some ballpark figure to start that part negotiation. सर चलिए, अगर बहुत शुरू में ही खुल जाता है और हाँ ना होती है, वो एक अलग बात होगी। Let us say someone, because usually when officers are appearing for a job, given the level of responsibility, it is a 2-3 stage process. ऐसा नहीं कि आप 15 मिनट मिलते हैं one is selected. Usually ऐसा, तो 2-3 बार मिले, टाइम लगाया, दूसरी पार्टी ने भी टाइम लगाया, सब। उसके बाद what if the initial offer is it is not meeting my expectations, and वो मतलब है ना, जोर का झटका धीरे से लगा, तो how to handle that thing? What steps should be taken? Yeah, काफी डिस्करेजिंग एक्सपीरियंस होता है अगर कभी ऐसा हो, when everything is over and you feel कि चलो ठीक है, एक इंटरव्यू तो क्रैक हो गया, जॉब ऑफर हाथ में आ रहा है, and when you actually look at the job offer, then you think, अरे मेरा तो एक्सपेक्टेशन कुछ और था, and यहाँ तो कुछ और है। जब लोगों से बात किया था तब वो कुछ और कह रहे थे, similar kind of industry, similar company, then why is it that this particular manager is giving me this particular figure? Right? So definitely disappointing रहेगा, discouraging रहेगा, but that is the start of the negotiation and one's journey to meet that expectation. So ऐसे cases में yes, one needs to be polite. Okay, thank you for offering me this particular position. I really like being here or working for this particular role. So एक थोड़ा positive tone, positive atmosphere set करना जरूरी है, and then set that considering your experience, your expertise, your skills, the number of years of experience, you would like to negotiate, because the salary that you are expecting were generally in the range of this to this. So you need to initiate that negotiation. And as we said, facts over feelings or emotions. तो आपके पास पूरा अपना एक salary negotiation का एक research document kind of a thing should be ready, that why are you saying the figure that you are saying? What is it is based on? Is it only based on the number of years of experience? कि भैया मैं 20 साल था उसके लिए इतना मांग रहा हूँ, या there are some facts and figures, quantifiable achievements, right? जैसे हमने भी बात किया था कि उस अपने के जो आपके जो स्किल्स है उसको आपने किस तरह से ट्रांसलेट करके उस दूसरे को समझाया कि all these things actually has been done by me, and in this particular role also I can bring value in all these. And that is why I am
seeking more salary, not emotionally, but yes, based on the facts and figures. तो आपके पास काउंटर ऑफर भी रेडी होना चाहिए विद फुल जस्टिफिकेशन. अगर कभी ऐसा हुआ कि जो सैलरी उन्होंने ऑफर किया तो आपको मैच नहीं कर रहा है, राइट? And as somebody said, right, he speak softly and carry a big stick, and you will reach far. So that will actually happen, help you in your life also and in your negotiations also, so that you could be respectful, assertive, firm, right? And firm on your worth. This is the word that I can bring to the table, and then yes, I think you will get what you negotiate for. और वो जो जोर का झटका था वो शायद आपको धीरे से भी नहीं लगेगा. That people was trying to bring out. सर एक लास्ट सवाल मेरा आज का. सो लाइक आई बीइंग ऑन दिस साइड एट टाइम्स, not at times, a lot of times we do hiring, and होता क्या है जब officers when they are getting hired, so they tend to overlook the employer challenges. और employer को भी उतनी ही जरूरत होती है, नहीं तो काम नहीं होता है, because without people, without resources, nothing can be accomplished. So हमने क्या realize किया, we had a huge budget constraint, we are a very small organization and we needed talent. So we realized कि if we offer a hybrid or a work from home model, the same task और the same उसी budget में हमें almost 40% better talent मिल जाता है in terms of skills and education and all, because people tend to use that discount of not commuting to work or commuting to work less and being able to take care of their families better. Similarly, if a veteran is negotiating for salaries other than the basic cash component कि मुझे इतना लाख इतना करोड़ चाहिए, what are the other benefits which one can prioritize and negotiate, और क्या possibilities हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे यहाँ वेटरन को पता ही नहीं होगा कि ये भी मैं negotiate कर सकता हूँ. Like you said, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दो भाई, काम ज्यादा करवा लो, अगर ज्यादा काम करवा के ज्यादा पैसे दे दोगे तो what are the other benefits, what's the whole package like? Okay, see, all said and done, hiring is time and effort intensive exercise. जितना टाइम एंड एफर्ट एक कैंडिडेट लगाता है उससे कहीं ज्यादा गुना एफर्ट हायरिंग मैनेजर या हायरिंग टीम लगाता है. एडवर्टाइजिंग और रीचिंग आउट टू द कैंडिडेट्स एंड देन स्क्रीनिंग देयर सीवीज और रिज्यूमे, देन उनका इंटरव्यू स्लॉट करो, इंटरव्यू लो, because it's all unproductive time. Hiring manager या प्रोजेक्ट मैनेजर को अपना काम से वर्क निकाल के इसके लिए आना पड़ेगा, and there are 4-5 candidates, first level then second level, each interview 30 to 40 minutes. So काफी इन्वेस्टमेंट हो जाता है from the company side, कैंडिडेट की साइड से तो है ही. So nobody would like कि इतना लंबा हम आ गए हैं, so this particular candidate should be left out just because कि we are not able to match on that salary expectation कि इसने X बोला था and मैंने X minus 10% बोला था या X minus 20% बोला था, और like उसको फिगर में बोले थे okay we were offering him 30 but the other person actually is asking for 35 or 36 or 38, right? और वो ब्रिज गैप जो ब्रिज नहीं हो पा रहा है on the salary aspect. So there's something called negotiating for the salary or negotiating for the value or the complete compensation package. तो जो हमारा compensation package होता है, CTC that they call it, is not only salary part is also one of the component. तो जहां पर हो सकता है कि in spite of all the efforts, ऐसा तो नहीं है कि negotiate करना ही नहीं है, negotiate तो करना ही है, but there has been a offer, then counter offer, and you feel कि ये जॉब तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, I don't want to let it go, but I also don't want to go at this level. तो उस केस में क्या किया जाए? So उस केस में there are other things that you can actually negotiate on. For example, joining bonus, right? Or relocation bonus. Because if somebody gets 3 lakhs rupees for shifting from Ranchi to Bangalore, so again it's a money. It's a money. आपका जो relocation है, that is being catered for by the company. तो कहीं ना कहीं आपके को पैसा मिल रहा है. Similar things can, sign up bonus or joining bonus. That is again a money component. Second thing is, as I was saying, location. हो सकता है that particular company has got an office in Gurgaon and got in Noida. And then you say, okay, ठीक है, if you cannot negotiate on the salary, but can you give me the Noida location? Because you stay in the Noida location. तो आपके लिए इतना commuting कम हो जाएगा. So if you actually think in money terms, that will also is a lot. Plus hassle, stress. Every day ट्रैफिक में 1 घंटा जाना 1 घंटा आना अगर आपका कम हो गया, so that will also actually can be compensated somewhere. So that is the second part.
हो सकता है the company can also offer you stock options. सीधे सैलरी तो हमारा यही है, लेकिन yes, stock options में हम आपको दे सकते हैं. So again, that can be converted into money. Or health insurance plan for you and your family. Again, it's a money part. या तो आप लें health insurance या company लेगी. So somebody has to shell out the money, right? Yeah, as Vipul was saying, work-life balance kind of a perk. Ki, okay, can you give me 2 days work from home and 4 days or 3 days I'll come to office? If that is okay, then again, less stress, less commuting, and it actually helps you. हो सकता है, one can actually negotiate on the leaves. बोले ठीक है, you can give me one week extra leave per year, because again अगर आप leave पे हो और पैसा मिल रहा है, so again that is money. या training and development के opportunities, या some courses आप करो उसके पैसे वापस हो. So there are different things that one can actually think of all this. और में हो सकता है कोई premier club membership मिले उसके साथ, okay, which the company is okay with because they have got some tie-up with one particular chain of clubs, and you say yes, which actually if you take it cost you maybe 3 lakhs per year, but if the company is giving you, it's free for you. So again, that's a 3 lakh amount, right? So ऐसे जो perks हैं, if one actually can actually think, then base salary plus all these perks may actually come out to be a more, win-win situation. In fact, a better option for that particular person rather than just taking that, salary part. So ये सब चीजें आप दिमाग में रख सकते हो, जब negotiation के लिए जाओ, and just don't negotiate only on the salary part, but negotiate on the value or the compensation pack. I think that will be actually helpful. Right. So comprehensively, thanks for this talk today, sir. I believe that the audience should be able to at least start thinking in this direction and negotiate better packages for themselves, overall salaries, benefits, positions, responsibilities, and have a good career in the corporate also. Thank you for your time, Ram sir. Yeah, thanks, Vipul. Thanks to you and so many of the transiting veterans, and I think veterans in the corporate also, because it's open to everyone who has been there as an audience. Thank you so much.